Hello kids, a very warm welcome to your SST class, and this is your SST educator Aprajita, and we are going to start with chapter number 1 of geography. So children, ready to start with me? The very first chapter, our environment. What is our environment? You will learn. क्या पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में? Environment. Our environment जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? Environment, natural environment, abiotic and biotic, human environment, protecting our environment. हमें अपने environment को कैसे बचाना है? Let us begin now. A perfect balance is necessary between natural and human environment. जो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट है, दो तरीके के जो एनवायरनमेंट है, इसमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पोल्यूशन एंड शुड लर्न टू लिव एंड यूज़ आवर एनवायरनमेंट इन अ सेंसिबल एंड केयरफुल वे. और हमें अपने एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर चेक लगाना ज़रूरी है. प्लस हमें एनवायरनमेंट में किस तरह से सेंसिबल तरीके से रहना है, उसकी देखभाल करनी है. दैट ऑल्सो इज़ वेरी necessary. Now let's read about the environment. The word environment is derived from the French word envirner, which means to surround. ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है environment word, जिसका वो फ्रेंच वर्ड क्या है? It is envirner, जिसका मतलब होता है to surround, आसपास घेरना, जगह घेरना. Our environment consists of the surroundings where we live. हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास का जगह जो है वो है environment. The air we breathe, the water we drink, and the food we eat all form our environment. All come from the environment. Environment से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें खाना मिलता है जो हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो हवा हम जिससे सांस लेते हैं, ये सब environment में ही आता है. It includes everything on, in and around the planet Earth. Our environment comprises unique conditions that make life possible on Earth. और environment में वो unique conditions होते हैं जो कि हमारे Earth पे रहना possible करती हैं. Our environment has two main components. Now there are two main components. कौन से? Natural and human made or man made. The natural environment comprises living and non-living things that occur naturally in our environment. और natural environment में कौन सी चीज़ें आती हैं? living और non-living things, जो कि naturally, और वो चीज़ें जो naturally होती हैं environment में. That is natural environment. And human-made environment consists of things that have been created by humans. और human-made environment में कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि मैन के द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस ने जिन्हें बनाया है. एग्जाम्पल, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट में आता है. ह्यूमंस एंड देयर सोसाइटी आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बीइंग और उसकी सोसाइटी जो है वो भी एक एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. नेचुरल एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? Abiotic and biotic. The natural environment is subdivided into physical and biological environment. अब natural environment तो अभी हमने पढ़ा कि जो naturally जिसमें चीज़ें होती हैं, living non living things आते हैं. अब इसको भी हम subdivide करते हैं दो parts में, physical और biological environment. Physical environment includes all such components that do not have life, such as mountains, water bodies, plains, soils, climate, sunshine, air, rainfall and snowfall. ये सभी चीज़ें physical environment हैं जिसमें कि life नहीं होती है. Okay? It is also known as abiotic. So abiotic environment वो environment है जिसमें कि ये mountains, roads, dams, bridges, ये rainfall, snowfall, ये सब आता है जिसमें कि there is no life. Now, biological environment consists of all living organisms, including bacteria, plants, animals, and humans. It is also known as biotic environment. अब biotic environment क्या है? जिसमें कि सारे living things included हैं. The biological environment consists of all living things, like plants, animals, humans, even bacteria. Now, based on physical state and characteristics,
physical environment is broadly divided into 4 domains. A physical environment जो कि abiotic है, which is also known as abiotic environment, it is subdivided. अब वो subdivided है 4 parts में, also called the realms or spheres. The 4 domains which jointly support life are, अब वो 4 domains क्या हैं? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Now children, just take care. This 4 domains कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. ये है फिजिकल एनवायरनमेंट के 4 डोमेन्स. फाइन. यू हैव रेड अबाउट दीज 4 डोमेन्स इन योर अर्लियर क्लास. प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में. नाउ इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. अब इनके बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी हम इस चैप्टर में हमें मिलेगी. Now see, this is the components, these are the components of environment: natural, human made, now human subdivided. Okay, just go through this. Now lithosphere, let's read about the 4 domains here. Lithosphere, the term lithosphere is derived from the Greek word lithos, which means rocks. Lithos का मतलब होता है rocks, और ये Greek word से derive किया गया lithos. Lithosphere is the outermost layer of the earth. This is the outermost layer of the earth, which with a solid rocky surface. इसका solid rocky surface होता है lithosphere. It has an uneven surface with different types of landforms such as mountains, valleys, plains, plateaus, etc. अब इस लिथोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अलग अलग लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. और इसका एक अनइवन सरफेस होता है. इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल विच इज द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. अब इसमें एक थिन लेयर, सॉइल की एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो कि सोर्स ऑफ लाइफ है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. It has forests and grasslands. It provides space for building human settlements, land for agriculture, mineral wealth and fossil fuels. ये सब चीज़ें पॉसिबल करवाता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो उनको रहने के लिए जगह, जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, मिनरल वेल्थ और फॉसिल फ्यूल्स भी यहाँ मिलते हैं. The lithosphere provides the base on which all human activities take place. Okay? Now, lithosphere includes the crust and the uppermost part of the upper mantle. अब lithosphere में क्या क्या आता है? upper mantle का uppermost part और जो crust है earth का, वो include होता है. The crust extends over continents as well as ocean basins. Rocks in their solid state are also found only in the crust. जो rocks हैं जो कि solid state में मिलते हैं वो केवल crust में ही मिलता है. The crust is divided into 2 parts: continental crust and oceanic crust. Now see, continental and oceanic crust. Okay? Mountains, plateaus and soils are formed on the continental crust. इसी continental crust पे mountains, plateaus और soils form होते हैं. Oceans rest on the oceanic crust. Oceanic crust पे oceans हैं. Oceanic crust is thinner, denser and younger than continental crust. Oceanic crust जो है वो continental crust से ज़्यादा पतला होता है. Now we come to hydrosphere, the second domain. Hydrosphere is derived from the Greek word hydro, which means water. Litho का मतलब था rocks, hydro का मतलब है water. Hydrosphere is the domain of all forms of water that exists on the earth. Earth पे जितने forms, water के जितने forms होते हैं वो सब इसी hydrosphere पे मिलता है. Water is found in 3 states: solid, ice, liquid, water and gaseous vapor. Anything related to water is a part of the hydrosphere. कुछ भी water से related है वो hydrosphere का part होता है. All forms of life on earth depend on water. अब earth पे जितने forms life का है, living state में जितने भी forms हैं वो सब किस पे depend करते हैं? water पे. There are various sources of water: rivers, lakes, seas,
oceans, aquifers and rainfall. ये सब water के forms हैं, sources हैं, sorry. The sphere of water comprises the oceans, seas and lakes etc. Covers 71% of the earth's surface. As we all know कि 71% अर्थ सरफेस का जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है. A small quantity of water is held by the atmosphere and some also gets absorbed underground during precipitation. Groundwater is found under the ground in soil and between layers of rocks. Rocks की layers के बीच में भी groundwater मिलता है और under the ground भी मिलता है. Oceans are important for the following reasons. अब oceans क्यों important हैं? They provide a link between landmass और continents. Continents और landmass के बीच का ये एक link होता है. Much of the water that falls on land as rain, snow, etc. comes from the oceans through evaporation. Evaporation के through ocean से ही ज़्यादा जो water है, amount of quantity of water है, वो कहाँ से आता है? Oceans से. They are an important means of international transport and trade. Through oceans only this international trade and transport is done. They provide food, minerals and fuels. अब ये oceans जो हैं वो हमें food, minerals और fuels भी provide करते हैं. That's why these oceans are important. Now the third domain is atmosphere. The atmosphere is the blanket of gases that surrounds the earth. हमारे earth के चारों तरफ एक किसका ब्लैंकेट बना हुआ है? गैसेस का ब्लैंकेट बना हुआ है. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around the earth. जो gravitational force है वो hold करके रखता है किसको? Atmosphere को. Okay? Air is a mixture of gases, dust particles and water vapors. We all know that air किसका mixture होता है? Dust particles होते हैं उसमें and gases हैं, dust particles हैं और water vapor, भाप. Air comprises gases such as nitrogen 78%. अब air में जो gases मिलती हैं उसमें nitrogen 78% है, oxygen 21% है और argon 0.9%. And other gases such as carbon dioxide, neon, ozone, hydrogen and helium which exist as trace gases. These gases are life supporting. Okay, they support our life system. Changes in the atmosphere produce changes in weather and climate. Atmosphere में जो changes होते हैं वो किस में changes show करते हैं? Weather में और climate में. The atmosphere has temperature and weight also. It is thicker near the surface of the earth and thinner at higher altitudes. अब ये जो atmosphere है ये इसकी मोटी लेयर कहाँ होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के पास इसकी लेयर थिक होती है और जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं इसकी लेयर पतली होती जाती है. द एटमॉस्फेयर हैज़ 5 मेन लेयर्स. अब एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers of atmosphere. All climatic changes such as lightning and rain take place in the troposphere. अब troposphere में क्या होता है? जो भी climatic changes होती हैं जैसे lightning and rain ये सब troposphere में होता है, which is the lowest layer of the atmosphere. The lowest layer of the atmosphere is troposphere. Fine? Here, look here. This is troposphere. The atmosphere is important for the following reasons. अब atmosphere क्यों important है? It protects life on the earth from space debris. Space debris से ये protect करता है earth की life को. It protects us from the scorching heat and the harmful rays, UV rays, ultraviolet rays, radiations from the sun. Sun से जो ultraviolet radiations आते हैं उससे हमें protect करता है ये atmosphere. It moderates the temperature on the earth. Earth के temperature को moderate बनाता है. It makes the water cycle possible. If there is no atmosphere, then how will the water cycle happen? ये water cycle को possible बनाता है. It enables us to hear sounds because air acts as a medium to transmit sound waves.
अब एटमॉस्फेयर में एयर है और इसी एयर के थ्रू क्या होता है, ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने में. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू हियर द साउंड. मेनी चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर a result of human activity, most of which cause great harm to the atmosphere. It is our duty to protect this thin envelope of air around the earth. अब एटमॉस्फेयर में जितनी तरह के भी चेंजेस आते हैं वो सब ह्यूमन एक्टिविटी से आते हैं और ज़्यादातर तो उस एटमॉस्फेयर को डैमेज करने वाले होते हैं. सो हमारी ड्यूटी क्या है, वी शुड प्रोटेक्ट दिस थिन एनवलप अराउंड द अर्थ. ही जो एटमॉस्फेयर का एक पतला सा एनवलप बना हुआ है इसको प्रोटेक्ट करना इज आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी. फाइन चिल्ड्रन. नाउ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज द जोन वेयर एटमॉस्फेयर एयर, lithosphere land and hydrosphere water interact with each other to support life. अब बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एयर, लैंड और वाटर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और लाइफ को सपोर्ट करती हैं. दिस इज अ नैरो जोन ऑफ लाइफ विच एक्सटेंड्स फ्रॉम बिलो द ओशन about 11,000 meters below sea level to the top of the mountains about 9,000 meters above sea level. Now see, this is the biosphere. See, lithosphere, hydrosphere, atmosphere. All three are interacting amongst themselves and it forms the biosphere. Interaction between physical and biological environment. For all practical purpose, the biosphere is considered as the fourth domain of the earth. अभी हम domains ही पढ़ रहे थे ना, 4 domains. This is the fourth domain of the earth. It includes biotic as well as abiotic components. Observation with the class of the environment. इसमें biotic और abiotic दोनों आते हैं. Life in the biosphere is dependent on soil, air, water and heat of the sun. So biosphere पे जो life है वो किस पे dependent है? Soil, air, water and जो sun की heat आती है उस पे dependent है. The different domains of the environment are interlinked and this relationship can be seen in the biosphere. ये interlinked है एक दूसरे से. The biosphere is the zone of interaction where all living organisms, the producers, consumers and decomposers are interdependent. Fine? Now, did you know children, do you know that World Environment Day is observed on 5th of June every year? Now, to explain further, the producers or autotrophs such as green plants can prepare their food on their own. अभी जो green plants हैं, producers, ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं by using water, carbon dioxide and sunlight. We all know this. Almost all other living beings are directly or indirectly dependent on plants for their food and are known as consumers or heterotrophs. प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और कंज्यूमर्स कौन हैं? जो इन पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं वो हैं कौन कौन हैं? दे आर द लिविंग बींग्स, द अदर लिविंग बींग्स. दे आर द अदर लिविंग बींग्स और उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर द 3 kinds of consumers. अब ये कंज्यूमर्स किस किस तरह के होते हैं? हर्बीवोर्स जो केवल हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं. कार्निवोर्स, those who depend on flesh, and omnivores, those who eat both. Decomposers are organisms such as bacteria and fungi, which are helpful in the breaking down of dead animals and plants. जो dead animals और plants होते हैं उसमें bacteria and fungi. Energy is transferred from one living organism to the other through various food chains. Okay? Many food chains form फूड वेब. बहुत सारे फूड चेन्स ऐसे हैं जो कि फूड वेब बनाते हैं. द ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन रिलाई ऑन ईच अदर फॉर फूड. वील जस्ट सी द फूड चेन हियर चिल्ड्रन. देयरफॉर इफ एनी वन लिंक इन द चेन इज डिस्ट्रॉयड, ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स इन द चेन आर इफेक्टेड. अब ये जो फूड चेन है इसमें एक भी ऑर्गेनिज्म अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक भी लिंक अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती है. Now see here, this is the sun, the primary consumer, the grasshopper, then secondary consumer, the frog, then the snake, tertiary consumer,
Then the final consumer is the hawk. हॉक के जो गिद्ध होते हैं, ये सभी जो डेड डिकम्पोज बॉडीज होती है, इनको फीड करते हैं ये. Then decomposers, this fungi is the decomposer. Okay. Now example of a food chain. Note the arrows in the food chain diagram point towards the direction of energy flow. ये एनर्जी फ्लो सन से इधर हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर टर्शरी कंज्यूमर पे, फिर फाइनल पे, एंड देन डीकम्पोजर्स. फाइन. Now ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem is a community consisting of non-living air, land and water and living components, plants and animals. इन दोनों को मिला के ecosystem बनता है, which are interdependent on each other. Fine. An ecosystem is formed by the interaction of the living organisms with each other as well as with the abiotic physical environment in which they live. A few examples of ecosystem are forests, deserts and grasslands. कुछ ecosystem के examples कौन कौन से हैं? Forests, deserts और grasslands. Ecosystems form wherever solar energy is received. जहाँ भी solar energy मिलती है वहाँ ecosystem form होता है. They are homes of certain species of flora and fauna. Their size may vary from that of a small pond to a vast rainforest. Larger ecosystems have specific kind of vegetation. जो बड़े ecosystems होते हैं वहाँ पे specific kind of vegetation होती है, such as tundra, taiga or the tropical rainforest. In each type of ecosystem, plants and animals adapt themselves to their environment. हर एक ecosystem में क्या होता है, जो plants और animals होते हैं वो अपने आप को adapt कर लेते हैं environment के according. जैसा environment होता है वैसे ही वो adaptation होता है उनका. The biosphere consists of distinct regions which are called biomes and aquatic life zones. This is ecosystem of a pond. ये pond का ecosystem. A biomes is a large ecological. A biomes is a large ecological community such as a forest, a desert or a grassland. An aquatic life zone is a water-based region where different forms of living organisms survive. For example, a river or a lake. देखिए ecosystem water का है, ये pond है, water है ना, ये इसका ecosystem है. There is continuous interaction between living and non-living components in the environment. Any change in the abiotic environment produces a resultant change in the biotic environment. कुछ भी change abiotic environment में होगा तो वो उसका resultant change जो होगा वो biotic environment पे पड़ेगा. For example, numbers and types of species get altered when there are climatic changes in their habitat. उनके habitat पे जैसे ही climatic change होता है तो उनका number vary करता है species का. A great variety of living organisms are found on the earth. The existence of different kinds of plants and animals in an environment is termed as biodiversity. What is biodiversity, children? The existence of different kinds of plants and animals in the environment is known as biodiversity. It has developed over billions of years. Humans are a part of this biodiversity. Now children, let's read about the human environment. Human environment comprises individuals, families, communities, religions, educational institutions, economic institutions and political institutions. ये सब चीज़ें human environment के अंदर हैं. Human-made environment includes human activities and their interaction with the physical environment. Human environment में क्या क्या होता है, जो human activities होती हैं और उनका interaction जो physical environment के साथ होता है. All human-made structures such as buildings, roads, dams, bridges, gardens, plantations and canals are examples of human-made environment. ये सब human-made environment में आता है. The natural environment provides all the resources for the development and survival of human beings. Early humans lived in harmony with nature. पहले जो human beings रहते थे वो nature के साथ harmony में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे. They adapted themselves
to their natural environment and did not disturb nature. So जैसा उनका नेचुरल एनवायरनमेंट था उन्होंने खुद को वैसे ही अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट को, नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया. Over a period of time with human development came, when human development came, advancement of science and technology. Now over a period of time क्या हुआ, जैसे human development हुआ तो advancement of science और technology भी हुआ. This led to rapid growth of industries, cities and population, and this affected the natural environment to a great extent. अब इसके साथ क्या हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी और साइंस में एडवांसमेंट हुआ इसके साथ ही ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ गया, सिटीज़ एंड पॉपुलेशन में क्या हुआ, ये इफ़ेक्ट होने लगे, पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, तो इससे इफ़ेक्ट किस पे आया, नेचुरल एनवायरनमेंट पे आया. ओके, ह्यूमंस इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल environment and modify it according to their needs. Now what humans do, वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपनी नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस लाते हैं. दिस इंटरैक्शन हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट. अब ये जो इंटरैक्शन है इससे क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है इंटरैक्शन और नेगेटिव भी होता है. समटाइम्स द इफेक्ट इज ओवरलैपिंग, कभी कभी वो इफेक्ट ओवरलैप करता है. For example, clearing of forests, lumbering and mining have negative impact on the environment. Trees are being cut down, इससे environment पे negative effect पड़ रहा है. Land that is cleared of forest is used to build houses for people and factories which provide employment to people. This is a positive aspect when we consider human needs. अब अगर हम human needs की बात करते हैं तो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि वो लैंड जो क्लियर किया जाता है, वो जो फॉरेस्ट काटे जाते हैं, वहाँ पे हाउसेस बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, लोगों को काम करने का मौका मिलता है वहाँ पे. ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इफ कंसिडर्ड टू ह्यूमन बीइंग. बट वी हैव कट डाउन द होल फॉरेस्ट, ये नेचर पे कितना नेगेटिव इफेक्ट करता है. Construction activities by human beings have changed the natural landscape and impacted the natural environment. ये जो construction, day night constructions, पूरे हर जगह construction हो रहा है, इससे natural landscape पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. For example, quarrying of stones and mining of minerals have created open pits on the surface of the earth. Such human activities are accelerating the process of environmental degradation. इस human activity से, जो human activities हो रही हैं, इनसे क्या हो रहा है, environmental degradation हो रहा है. Increase in the amount of carbon dioxide in the air has led to global warming. और जो हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हुआ है, बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. Global warming is defined as the gradual increase in the average temperature of the Earth's surface, including oceans. And global warming में क्या हो रहा है, gradual increase हो रहा है Earth के temperature में. It began in the late 19th century and is continuing till date. Late 19th century से ये start हुआ global warming और ये आज तक चल रहा है. The effects of global warming are rise in the temperature, rise in ocean and sea level, caused by the melting of ice sheets melt हो रही हैं और इससे ocean और sea level बढ़ रहा है, and the rise in the extreme weather events. This has also caused changes in the physical environment of the living organisms. So this global warming has affected so much. Protecting our environment. There is a continuous interaction and interdependence between the three domains of the environment. This is especially true about biological environment. Interdependence है 3 domains का. So children, what do you learn from this? That we should save our environment, we should protect our environment. The degradation which is happening, that should be stopped, so that the global warming also doesn't increase. There is so much of global warming, the increase in the temperature of the earth is happening. Okay children? So now there is a glossary here. Let's read the meanings of some words
abiotic, physical rather than biological, domain, the area or knowledge and activity, survive to continue to live and exist, and lumber means to move in a slow and heavy way, resultant, produced as a result of something. Now, let's take a quick review what we have read in the chapter. Environment is our basic life support system. It can be broadly classified into two broad groups, natural and human. The natural environment includes both physical and biological environment. The physical or abiotic environment is the prevailing natural conditions which comprise of land, water and air. The biological or abiotic environment consists of all living things which can be classified into four categories: plants, animals, humans and microorganisms. Okay children, so this was all in the chapter which we have read just now. So now children, let's answer some questions here. There is a OMR sheet given. You have to fill in, darken the circles, whatever is the answer there, you have to darken the circle here. Darken the circle of correct option in the OMR sheet. Which of the following is not a natural ecosystem? Desert, forest, land, aquarium. Aquarium is not a natural ecosystem. Which of the following is not a part of human made environment? Human made environment का part नहीं है. कौन सा? Mountains, industry, transport, parks. Mountains are not a part of human made environment. The domain of water is referred to as biosphere, hydrosphere, lithosphere, atmosphere. Hydrosphere. Hydro means water. The frozen part of Earth's hydrosphere is made of soil, ice, sand, rain. It is made of ice. The frozen part is made of ice. Which among these is an abiotic component of the environment? Plants, animals, water, humans. Abiotic is water. Okay? Now, fill in the blanks. Here are some words given in the box children. पहले words पढ़ते हैं. Biosphere, lithosphere, natural, natural resources. The dash environment consists of air, water and land. The natural environment. The natural environment consists of air, water and land. The narrow zone of Earth. The narrow zone of Earth where land, water and air interact with each other to support life is called, what is it called? It is called biosphere. It is known as biosphere. Fine. Overuse of dash often results in nature's degradation. किस चीज़ के overuse से nature का degradation होता है? Overuse of natural resources. So write down natural resources. SOURCES. Fine. The abiotic environment includes the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So write down lithosphere. Yeah. Lithosphere. Okay children. Now let's move further. Now children, say if the given statements is true T or false F. Lithosphere has a thin layer of soil. Yes, this is true. It has a thin layer of soil. Oceans rest on the continental crust. No, this is false. They rest on the oceanic crust. Exosphere is the first layer from the surface of the earth. Yes, this is true. Early humans lived in harmony with nature. Yes, this is also true. The biosphere includes biotic as well as abiotic components. Yes, children, this is correct. So, write down T here. Now, answer the following questions. What is environment? So, as we have read, it refers to the surroundings or conditions in which the living organisms exist, and it includes both biotic and abiotic components. What is hydrosphere comprised of? What is it made up of?
The hydrosphere is made up of all the water on the earth like oceans, rivers, lakes, groundwater, ponds and the water vapor in the atmosphere. What is the significance of biosphere? So as we have read children in the अभी आपने पढ़ा biosphere के बारे में, the main thing is the life exists on biosphere. So just go through that biosphere again. फिर से पढ़िएगा biosphere के बारे में and write down what are the other significance, the significance of the biosphere. What is an ecosystem? The community of living organisms interacting with each other and their physical environment that forms an ecosystem. Describe the reasons of environmental pollution. Environmental pollution, जो environment का pollution है, उसके reasons क्या क्या हैं? Now these environmental pollutions, they occur due to various human activities and the natural processes. So the different types of environmental pollutions are the pollution due to industrialization, then transportation, agriculture, deforestation, waste disposal and mining. Fine children? So here we end up with our chapter and I hope you have got a lot of knowledge about our atmosphere, about the different domains of atmosphere and many more things. So please go through the chapter again, read it very thoroughly and stay tuned for the new video. We will meet soon in a new video with a new chapter. So till then, stay blessed, be happy, bye.